हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे MMRDA 2026 की जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक 12 लॉन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के कुछ MCQs कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूटी एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए शॉर्ट नोट प्लस MCQs PDF अवेलेबल है, जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं विद 2800 प्लस MCQs है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉप ड्रेसिंग इन लॉन इज टू। तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इंक्रीज ग्रास हाइट, सेकंड इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड लेवल सरफेस, थर्ड रिड्यूस मूविंग फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ प्रिवेंट वीड ग्रोथ कंप्लीटली। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड लेवल सरफेस, बिकॉज top dressing improves soil texture, smoothness and nutrients availability. Next, second, which grass species is most suitable for shaded lawn condition in India? The option है, first Candon dactylon, second Zosia japonica, third Paspalum notum and Anopax compressors. तो correct answer है second. Fourth, Axonops compressors, because it's a tolerate shade better than the most lawn grasses. नेक्स्ट, थर्ड, विच मेथड लॉन एस्टेब्लिश प्रोवाइड्स इमीडिएट ग्राउंड कवर? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट सीडिंग, प्लगिंग, स्प्रिंगिंग, टफिंग। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ, टफिंग, बिकॉज मीन्स लेइंग सॉर्ट, सो प्रोवाइड इंस्टेंट लॉन कवरेज। नेक्स्ट, फोर्थ, फ्रीक्वेंट मूविंग ऑफ लॉन प्राइमरी एनकरेज। तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट वर्टिकल ग्रोथ, सेकंड रूट डिके, थर्ड lateral growth and density, and fourth weed infestation. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, lateral growth and density, because moving promote tillering leading to dense turf. Next, fifth, which nutrient is most responsible for lush green color in lawn? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन promote chlorophyll formation and vegetative growth. नेक्स्ट, सिक्स, डिटैचिंग इज नेसेसरी व्हेन? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट सॉइल बिकम अल्कलाइन, सेकंड टैच लेयर एक्सीड क्रिटिकल थिकनेस, थर्ड लॉन इज न्यूली एस्टेब्लिश एंड फोर्थ ग्रास शो फ्लावरिंग। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टैच लेयर एक्सीड क्रिटिकल थिकनेस, बिकॉज एक्सेस टैच मीन्स ग्रेटर देन 1 to 1.5 सेंटीमीटर, रेस्ट्रिक्ट वाटर एंड एयर मूवमेंट। नेक्स्ट, सेवन, विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्स? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर प्रोवाइड यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लॉन। नेक्स्ट, एट, द आइडल सॉइल पीएच फॉर मोस्ट लॉन ग्रासेस इज? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट 4 to 5.0, 5.5 to 7.0, 7.5 to 8.0 एंड अबव 9.0। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, 5.5 to 7.0, because slightly acidic to neutral pH is optimal for tough growth. Next, ninth, which practice improve aeration in compacted lawns? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट रोलिंग, scarification, aeration and mulching। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, aeration, because aeration create pore of air, water and roots। ऐसे देखिए, मराठी व्याकरण के पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेंथ, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीडिंग मेथड इज? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट हाई कॉस्ट, सेकंड स्लो एस्टेब्लिशमेंट एंड विट कंपटीशन, थर्ड रिक्वायर स्किल लेबर एंड फोर्थ पुअर रूट डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, स्लो एस्टेब्लिशमेंट एंड विट कंपटीशन, बिकॉज सीडेड लॉन टेक टाइम एंड आर prone टू वीड इन्वेशन। नेक्स्ट, 11, which grass spread primary through stolons? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट फेक्शस सैप, सैंडलोन डैक्टलॉन, लोमियम पिरे एंड पो एनम। तो करेक्ट आंसर सेकंड, साइडन डैक्टलॉन, बिकॉज बर्मुडा ग्रास स्प्रेड थ्रू द stolons and rhizomes. नेक्स्ट, 12th, ओवर वाटरिंग लॉन्स में लीड्स टू? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट इंप्रूव एरिएशन, सेकंड डीप रूट ग्रोथ, थर्ड फंगल डिसीज एंड शैलो रूट एंड फोर्थ रिड्यूस पेस्ट अटैक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड,
fungal disease and shallow root because excess water reduce oxygen and promote disease. Next 13, rolling of lawns is mainly done to, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज रूट डेप्थ, सेकंड लेवल द सरफेस, थर्ड इंप्रूव ड्रेनेज एंड फोर्थ इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. तो करेक्ट आंसर है सेकंड लेवल द सरफेस बिकॉज रोलिंग स्मूथन अनइवन सरफेस बट एक्सेसिव रोलिंग कॉम्पैक्ट सॉइल. Next 14, which is not a method of vegetative propagation of lawns. देखो ऑप्शन है फर्स्ट टफिंग, स्प्रिंगिंग, प्लगिंग, ब्रॉडकास्टिंग. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ ब्रॉडकास्टिंग बिकॉज ब्रॉडकास्टिंग इज अ सीडिंग मेथड नॉट वेजिटेटिव propagation. Next 15, weed control in lawn is best achieved by. देखो ऑप्शन है फर्स्ट हेवी इरिगेशन, सेकंड डेंस टफ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, थर्ड फ्रीक्वेंट रोलिंग एंड फोर्थ अवॉइडिंग मूविंग. तो करेक्ट आंसर है सेकंड dense tough and proper maintenance because healthy dense lawn suppress weed naturally. Next 16, the purpose of scarification is to. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज सॉइल pH, सेकंड रिमूव thatch or mulch, थर्ड improve nitrogen content and fourth reduce irrigation. तो करेक्ट आंसर है सेकंड remove thatch and moss because scarification remove organic debris, okay, organic debris and improve health lawn. Okay, next 17, which season is most suitable for lawn establishment in tropical region. ठीक है, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे विंटर, सेकंड समर, देन मानसून एंड लेट ऑटम. तो करेक्ट आंसर है थर्ड मानसून बिकॉज मानसून प्रोवाइड मॉइस्चर एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ. ओके, नेक्स्ट 18, द रिकमेंडेड मूविंग हाइट शुड. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिमूव एंटायर लीफ ब्लेड, सेकंड रिमूव फ्रॉम मोर देन 70% ऑफ ग्रास हाइट, थर्ड रिमूव नॉट मोर देन 1/3 ऑफ ग्रास हाइट एंड फोर्थ बी सेम irrespective of grass type. तो करेक्ट आंसर है थर्ड रिमूव नॉट मोर देन 1/3 ऑफ ग्रास हाइट. ओके, बिकॉज cutting more than 1/3 stress the grass. Next 19, which grass is most drought tolerance. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सैंडोन डैक्टलॉन, ओस पैरेंटिस, लुइयम प्रेंस एंड एग्रोटिस सैप. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट साइडोन डैक्टलॉन बिकॉज इज अ बर्मुडा ग्रास इज हाईली ड्रॉट एंड रेजिस्टेंस. ओके, नेक्स्ट 20, द मेन फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन लॉन मैनेजमेंट इज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लीफ ग्रोथ, सेकंड रूट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस, सेकंड फ्लावरिंग एंड फोर्थ क्लोरोफिल सिंथेसिस. तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकंड रूट डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस बिकॉज पोटेशियम इंप्रूव स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रूट स्ट्रेंथ. ओके, नेक्स्ट वैसे देखिए हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, ऑल इन वन जीके जीएस पीडीएफ अवेलेबल है, मराठी व्याकरण एंड इंग्लिश ग्रामर. जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.